Students, Assalamu alaikum. The topic which I am going to explain, that's name is the opportunity cost theory. This topic is from the book of International Economics by Dominic Salvatore at page 42. In fact, an economist, Gottfried Habler, presented this theory in 1936, and this theory is base for comparative advantage theory. Or we can say that comparative advantage theory has been explained on the basis of opportunity cost theory. That's why sometimes comparative advantage theory is referred to as the law of comparative cost. Before going to explain the definition and the concept of this theory, I would like to explain the two basic assumptions of this theory. First is that there are two nations. First is United States and second is United Kingdom. Second assumption is that there are two commodities. First is wheat and second is cloth. Both the countries are producing both goods and doing trade with each other. जी इसको यहाँ से हम पढ़ लेते हैं. According to the opportunity cost theory, the cost of a commodity is the amount of a second commodity that must be given up to release just enough resources to produce one additional unit of the first commodity. जी इसका मतलब ये है कि चूँकि वी हैव सपोज्ड कि दो कंट्रीज़ हैं और उन्होंने दो चीज़ें ही प्रोड्यूस करनी है, क्लॉथ और वीट. तो दोनों में से एक चीज़ जो है उसका एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो दूसरी चीज़ है उसके जितने यूनिट्स क्विट करने पड़ते हैं, रिड्यूस करने पड़ते हैं, प्रोड्यूस जिनकी प्रोडक्शन को छोड़ना पड़ता है या उधर से वसाइल निकाल के, तो जो पहली चीज़ है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, उसका एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो वी कैन से कि अगला यूनिट प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो यूनिट्स हैं दूसरी चीज़ के जिनको हम प्रोड्यूस नहीं करते या जिनको हम ड्रॉप कर देते हैं. जी उसके बाद आ जाएं. कॉन्सिक्वेंटली द नेशन विद द लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज. एक कंट्री जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करता है, तो उस कंट्री को उस चीज़ की प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल हो जाता है. और जिस चीज़ को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा होती है उस चीज़ में उसको कंपैरेटिव डिसएडवांटेज जो है वो फेस करना पड़ता है. ये एक एग्जांपल के ज़रिए इसकी एक्सप्लेनेशन है. यहाँ से देखें. फॉर एग्जांपल, इफ़ इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड the United States must give up 2/3 of a unit of cloth to release just enough resources to produce one additional unit of a wheat domestically, then the opportunity cost of a wheat is 2/3 of a unit of cloth. In example, 1 unit of wheat is equal to 2/3 of cloth in the United States. जी इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है कि विदाउट ट्रेड यानी ट्रेड होने से पहले की सिचुएशन है. यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वीट का एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करना चाहता है. तो वीट का एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए चूंकि वो क्लॉथ भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्लॉथ जो है उसकी प्रोडक्शन जो है उसमें से वो 2/3 जो क्लॉथ का यूनिट है उसको वो रिड्यूस करेगा, उसको क्विट करेगा. उसकी 2/3 ऑफ क्लॉथ जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो वहाँ से वसाइल निकाल के वीट की प्रोडक्शन में इंस्टॉल कर देगा. सो वी कैन से कि यूनाइटेड स्टेट्स जो वीट की एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करता है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लॉथ जो 2/3 क्लॉथ का यूनिट है वो होगी. ओके अब हम सपोज कर लेते हैं
کہ یونائٹڈ کنگڈم جو ہے نا، یونائٹڈ کنگڈم میں if 1 unit of wheat is equal to 2 unit of cloth، یونائٹڈ کنگڈم میں 1 unit of wheat پروڈیوس کرنے کی اپرچونٹی کاسٹ 2 units of cloth ہیں. یعنی یونائٹڈ کنگڈم میں صورتحال تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ اگر 1 unit of wheat کو پروڈیوس کیا جاتا ہے تو 2 units of cloth جو ہے اس کو سیکریفائز کرنا پڑے گا. 2 units of cloth جو ہے اس کو پروڈیوس نہ کر کے اور وہاں سے وسائل نکال کے تو گندم جو ہے، ویٹ جو ہے، اس کی پروڈکشن میں ایلوکیٹ کرنے پڑیں گے. سو ان یونائٹڈ کنگڈم جو 1 unit آف ویٹ کی پروڈکشن کی اپرچونٹی کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، اور وہ ہے 2 units آف کلاتھ. جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں 1 unit آف ویٹ کو پروڈیوس کرنے کی اپرچونٹی کاسٹ کم ہے، جو کہ 2/3 آف یونٹ آف کلاتھ ہیں. اوکے، سو امریکہ جو ہے اس کو ویٹ کی پروڈکشن میں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل ہو جائے گا، اور امریکہ جو ہے وہ ویٹ کی پروڈکشن میں اسپیشلائز کرے گا اور اس کو ایکسپورٹ کرے گا. آن دا ادر ہینڈ جو یونائٹڈ کنگڈم ہے اس کی چونکہ ویٹ کو پروڈیوس کرنے کی اپرچونٹی کاسٹ زیادہ ہے اور کلاتھ کو پروڈیوس کرنے کی اپرچونٹی کاسٹ کم ہے. سو یونائٹڈ کنگڈم شوڈ گیٹ اسپیشلائزیشن ان دا پروڈکشن آف کلاتھ، بیکاز کہ اس کی جو اپرچونٹی کاسٹ ہے کلاتھ کو پروڈیوس کرنے کی وہ کم ہے. اوکے اسٹوڈینٹس، ہوپ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.